Before we start that, can anyone tell me what does ES means? ES का मतलब क्या है? That ES in ES6, what does that means? Yes. ECMAScript, right? Right. So we have already discussed about it कि ECMAScript होता क्या है? तो basically it's a set of rules and regulation that our JS has to follow. ठीक. Now previously जब हम अब तक जो हमने कोडिंग किया है जावास्क्रिप्ट में, we have done it based on your ES5 syntax. Right, right. So ES5 syntax, if I want to divide stuff, I mean, not largely, but uh, overall, so we had a variable which is called var, right? So this var thing was your ES5, right? ES5 में आता था. Then which variable did we learn about? Others variable like let and const, right? तो ये जो थे let and const, they come under ES6, right? जब ES6 introduce हुआ था तो उसमें these variables were there. All right. So in here, let's say if I want to create a function, I'm gonna write function, I'm gonna write a name, and I'm gonna do this, right? Was this a way of creating functions? है ना? तो उसी तरीके से in here we have one type of syntax for that, which is called arrow functions. Right, then multiple things are there like rest parameters, right? Parameters, and we have spread and all. Okay, so we're going to discuss that, but overall we have these stuff which we have already learned. ES6 matlab fundamentals are going to be same. We're just going to upgrade some syntaxes, that's all. All right, so ES is nothing but your versions. So ES6 for now is the version that we're going to learn. ठीक है. All right. So first thing first, let's cover about arrow functions. So if you have gone through your pre-class, you might have already seen कि arrow functions कैसे काम करते हैं. तो जिन्होंने देखा at least, was it any different than your regular function except for the syntax? Response करने में, like return करने में, anything? No, no. So before that, tell me something. I have a piece of code. Let's say I have this piece of code and I want to run them, right? I'm going to uncomment line number 1, then this one, and then this one. Tell me what are we expecting in output? Output पे हम लोग क्या expect कर रहे हैं? So let's go for this thing. Line number 33. Right? If I uncomment this one, what's going to happen? We're going to call print one function. This is that function. This is that function, right? तो अभी क्या होगा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने वाला है, राइट? एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर होस्टेड इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? क्या क्या होस्ट होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में? वेरिएबल्स which is represented by var and functions. ये दोनों होते हैं होस्ट, राइट? राइट, वेरिएबल कैसे होस्ट होते हैं? दे आर होस्टेड विद अ प्लेस होल्डर वैल्यू which is called undefined, right? But functions कैसे hoist होते हैं? They're hoisted entirely. पूरा का पूरा function is just sent there with their specific values. Yes, yes, yes. ठीक है. तो वही चीज I tried to incorporate here. अभी we are going for this function. तो this function जब ये hoist होगा तो it's gonna be sent something like this only. मतलब जैसा function है as it is वो चला जाएगा, right? This entire thing. And then if I go and call this function in here, am I not calling this entire piece of code? Right? So if I go and uncomment this piece of code, I'm getting hello one. ठीक, इतना समझ आता है? We have already covered these things there. So I hope this is fine. इतना समझ आता है, right? ठीक है. Let's say if I uncomment this and I have this way of creating a function.
राइट एक ये तरीका है इन विच आई हैव रिटन प्रिंट टू, आई हैव रिटन फंक्शन एंड आई हैव रिटन दिस. व्हाट्स दिस पीस ऑफ कोड कॉल्ड? वो पीस ऑफ कोड को क्या बोलते हैं हम लोग जिसको मैंने मार्क किया है? anonymous functions. Anonymous functions. So what was this thing called? This entire structure, ये फंक्शन बनाने के तरीकों को क्या बोलते थे? Was it called function expression? Function expression. Yes. Yes, remember. अगर याद नहीं है तो अभी याद आ गया. Right, and what was this thing called? Function declaration. याद है? याद है, we discussed it when we were discussing anonymous function and all. Function वाले लेक्चर में. राइट तो ठीक है. अब हम जब फंक्शन एक्सप्रेशन करते हैं तो नाउ डू यू गाइस थिंक ये वाला फंक्शन रेगुलर फंक्शन की तरह होस्ट होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज इट गोना गेट होस्टेड लाइक रेगुलर फंक्शन? रेगुलर फंक्शन की तरह ऊपर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन स्टोर्ड है एक वेरिएबल में. इट्स गोना गो एंड सेंट एज अनडिफाइंड. राइट, अभी आपने होस्ट कर दिया वैर और प्रिंट को एज अनडिफाइंड. अच्छा अभी बताओ, प्रिंट अनडिफाइंड होगा मतलब होस्ट अनडिफाइंड होगा या फिर ये इधर जाएगा? किधर जाएगा? दिस वन. तो अगेन वैर वाले वेरिएबल्स ही होस्ट होते थे, रिमेंबर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना. तो लेट वाले वेरिएबल्स क्या होंगे? वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाएंगे, है ना. तो अभी टेम्पोरल डेड जोन में चीजें हैं, तो डू यू थिंक कि अगर इफ आई अनकमेंट दिस लाइन प्रिंट टू विल बी एक्सेसिबल? Print will be accessible? No, right? So if I go and uncomment this piece of code, I'm getting a reference error. मुझे एक reference error मिल रहा है कि cannot access print to before initialization. ठीक ठीक, तो ये तो हुआ जब आपका फंक्शन एक्सप्रेशन टेम्पोरल डेड जोन में था. ठीक, एक चीज ऑब्जर्व करना. लेट्स से इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड इसको कमेंट करके इफ आई पेस्ट इट हियर एंड इफ आई मेक इट वैर, राइट. अभी के लिए you saw the error, reference error was this. If I go and update it with var, are we getting something else? Right, and it's basically a type error. ठीक, तो वो बोल रहा है कि print to is not a function, print to has a value of undefined. ठीक, तो अभी क्या हुआ? For those guys who are getting confused, confused नहीं होना चाहिए था, but ठीक है. एक let me show you once and let me clear that. So if I take this piece of code and let's go. ठीक, अभी यहाँ पे if I paste my piece of code, ठीक, तो now what happens? We're creating execution context, right? And execution context में दो फेज होते हैं, क्रिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज. क्रिएशन फेज में जब हम चीजों को सम वैल्यू देते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर वैल्यू अनडिफाइंड एंड फंक्शन को फंक्शन, दैट थिंग वाज कॉल्ड होस्टिंग. रिमेंबर रिमेंबर इतना याद है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता था, राइट ना. एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वी हैड अ रूल. वो रूल क्या होता था कि ओनली वैर वाले वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर गोना बी स्टोर्ड इन दिस, राइट. जो लेट और कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स है, दे आर सेंट समवेयर एल्स, अ हाइपोथेटिकल प्लेस व्हिच इज कॉल्ड टेम्पोरल डेड जोन. ठीक, तो उनको अनडिफाइंड भी नहीं दिया जाता है, दे आर जस्ट देयर. ठीक, एंड वंस दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज डन रनिंग, उनको अपनी वैल्यू मिल जाती है. ऑलराइट, तो वही यहाँ पे हुआ. क्या हुआ? when we declared function like this, function की entire value was getting saved in hoist, right? तो ये function ऊपर गया and it was getting hoisted as it is, जिस तरीके से function है, right? So that's why we were able to print the solution, जो भी हमने उसके अंदर कंसोल लिखा था. बट जब हमने var के साथ एक्सेस किया तो now this thing is function expression. तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे ले जाके उसने इसको
print टू को वैल्यू दे दिया अनडिफाइंड, राइट? नाउ यू कांट कॉल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को कॉल नहीं कर सकते। यस करण, ठीक। एंड वहीं पे इफ वी वेंट फॉर लेट वाला, दिस वाला फंक्शन एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या होता, अनडिफाइंड था ही नहीं, तो दिस एंटायर थिंग इज नॉट एक्सेसिबल एट ऑल। ठीक है, तो दिस वाज हैपनिंग, एंटायर स्टफ वाज देयर जस्ट टू टेल यू गाइस कि ये फंक्शन और ये फंक्शन में थोड़े से फंडामेंटल डिफरेंसेस है। वो क्लियर है क्या डिफरेंसेस है फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में? पीपल समझ आया गाइस? 1-0, राइट? ठीक है, तो जो एरो फंक्शंस होते हैं ना, जो एरो फंक्शंस होते हैं, एरो फंक्शंस, दे आर जस्ट लाइक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक। उसमें क्या करते हैं, जस्ट लाइक आई हैव डन इट हियर, वी डिफाइन अ फंक्शन, राइट? सो लेट्स से आई एम गोना डिफाइन अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रीट, राइट? एंड आई एम गोना गिव इट अ वैल्यू। नाउ नॉर्मली फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, राइट? बट जब एरो फंक्शंस लिखते हैं, यू डोंट नीड टू राइट दिस, यू जस्ट राइट योर पैरेंथेसिस, उसके बाद यू अप्लाई अ एरो एंड देन यू गो फॉर अ ब्रैकेट, ठीक। नाउ यहाँ पे यू कैन पास योर आर्ग्यूमेंट एंड ऑल, एंड यहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड राइट कंसोल डॉट लॉग हेलो, राइट? So let me comment everything upside here, ठीक है। चलो, तो if I go and call this thing, so let's say if I call greet, we'll see I'm still printing that hello, all right? ठीक है, where print to instead of let, then will it work same where in here? दोनों केस में it's gonna give error, दोनों केस में, right? But you have to keep this in mind कि दोनों अलग अलग जगह होस्ट हो रहे हैं, राइट? वैर वाली चीजें होस्ट हो रही है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, लेट और कॉन्स्ट वाली चीजें होस्ट हो रही है टेम्पोरल डेट जोन में, तो एरर्स अलग अलग आएंगे, क्लियर है, राइट? ठीक है, बैक टू एरो फंक्शंस। सो इज इट क्लियर कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फंक्शन इनटू एन एरो फंक्शन? एवरीवन, एवरीवन, ठीक। नाउ कोई फायदा दिख रहा है फॉर दिस थिंग टू कन्वर्ट अ फंक्शन इनटू एरो फंक्शन? एनी एडवांटेज यू गाइस आर सीइंग? शॉर्ट, शॉर्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इवन डू दिस। तो इफ यू जस्ट हैव वन थिंग टू रिटर्न, राइट, एक ही लाइन ऑफ कोड है, यू डोंट हैव टू राइट लॉजिक और एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट गो एंड राइट ग्रीट इक्वल्स टू दिस, एरो लगाओ, you don't have to create a block, you can just write console dot log hello, right? And अगर आप जाओ and if you call greet ना, it's still gonna give you hello, right? तो basically आपका syntax it is decreasing with a lot of cases, right? तो कोड को सिंपल कर रहा है, करेक्ट, करेक्ट। नाउ दिस थिंग वोंट शो मच इफेक्ट यहाँ पे, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि एनोनिमस फंक्शन जब हम कॉल बैक फंक्शंस वगैरह में कॉल करते हैं, हाउ बिग ऑफ अ हेल्प दिस थिंग इज गोना बी, राइट? राइट, वो भी डिस्कस करेंगे, बट ये बताओ कि ये क्लियर है, हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन वी क्रिएट अ फंक्शन इनटू अ एरो फंक्शन? ऑलराइट, ठीक है, तो एक छोटा सा काम करो, I have a function which is called add. It takes two parameters a and b, and it basically returns a plus b, right? And I'm gonna call this with 1 and 2. ये function लो and convert this function into arrow function. Take this function and convert it into arrow function. Everyone, quickly. Add comma b and return a plus b. Jyoti, correct? And we are writing it as return. Shake, correct?
राइट अभिजीत करेक्ट एरो लगाना भूल गए द एंगल ब्रैकेट करण ऑलमोस्ट करेक्ट बट वेयर आर द पैरामीटर्स प्रवीण सेम पैरामीटर्स पैरामीटर्स कहाँ है रोहित करेक्ट राहुल करेक्ट ऑल राइट तो लेट्स डू इट टुगेदर इट्स नथिंग इट्स इजी आपको बस क्या करना है नॉट श्योर व्हाई माय कर्सर इज नॉट वर्किंग बट ठीक है चलो I'm gonna just write add equals to I'm gonna write a comma b and this thing is gonna accept some parameters which I have provided here. Now, if I can just return this in one line without writing any logic, I can go for this, right? I can go for this one. जिसमें I won't have to write return either. I won't have to write return. ये automatically इस चीज को return कर देगा given that there is no other logic written. Right? So if I go and call this add with one, I'm gonna console this add with 1 comma 2, right? You see, we're getting the value. We're getting the value, right? But let's say कि I have a condition B should be even. B even होना चाहिए. Now I'll have to write some piece of code, right? Before doing all this stuff. So can I put it in one line? As a one expression? I won't, right? तो उस केस में will need to create block. And जब block बनाओगे, then you have to return, right? तो ठीक है, block बनाते हैं. And in this, I'm gonna check if B is divisible by 2. If this is divisible by 2, then only return A plus B, right? Else I can go and print else return odd B, right? So let's say if I go and try to access it, yeah, we are printing 3. And let's say if I make B as odd, so I'm getting odd B. Clear है? Clear है? Right? So it's as easy as this sounds. ठीक है? Now, again, as I told you guys, कि callback function में this thing is gonna be a big help, right? So let's say मेरे पास एक array है and which has some values 1, 2, 3, 4, and 5, right? So if I want to run a higher order function on this thing, I can go and write array.map, right? And उसके बाद अंदर we were writing callback function like this, like this. Can we convert this into arrow function? Easy है, array.map लिखो and this anonymous function is going to be converted into arrow function. So it's nothing but this thing, and this thing. That's all. Right? अब इसके अंदर we can call that element and we can print it. Right? And even मान लो कि we just have to return the element or just print that element. तो let's say कि यहाँ पे map नहीं, for each will be better approach for this case. और let's do one thing, map ही करते हैं and n array equals to, right? So let n array equals to array.map and we are returning element into 2. Take, so if I go and do console.log n array, what am I getting? What am I gonna get? If I go and do console.log n array, everything doubled, right? तो basically हम सेम टू सेम यही कुछ लिख रहे हैं, कहाँ गया वो, ये फंक्शन लिख रहे हैं with this thing, but we know कि हमें बस एक ही चीज रिटर्न करना है, हर एक एलिमेंट को डबल करना है. तो do we need to go and write it in block या फिर डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, right? So you won't even need to write return statement. ठीक, so if I go and write an array, I'm gonna get everything doubled. Clear है? Clear है? So yeah, it seems like yes, it is decreasing the code usage a lot, right? काफी आपका space बचा रहा है, तो ठीक है, right? I have a small question for you guys.
I have created a data array. Let me fetch that. So let's say I have this data array, right? I'm gonna make it small. ये दिख रहा है सबको? Is this visible? Size visible है. ठीक है, ठीक है. तो this is a data. आपको क्या करना है? You basically have to write filter, create a function, right? Create a function which takes data array and it takes a token, right? This token will be basically how do you want to filter department, right? So it's gonna have a department value. Take, so basically we're gonna have a function, right? Let's call it parent function, and it's gonna accept two things. It's gonna accept an array, एक array accept करेगा, and it's gonna accept a token, right? Now इस function के अंदर based on the token filter and return the new array. Question clear है? क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? क्या करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से? Is that clear what I want? We have an array, right, which has these multiple objects. They have some department, right? In this, if I call this function with parent, I'm going to call it with data array, and I'm going to call it with accounting, right? So I should get only accounting wale object from this function in return. Clear? Token, let's call it flag. That's fine. That's fine. All right. Filter part is correct, Jyoti, but we need a function too, right? Which should return that. Keep that function in ES6 also. People, वो parent function को भी ES6 में बनाना. Try करो. Right? Shake, correct. Array token. And when you're writing multiple stuff, na, you'll have to return G1. Right? तो array को हमें return भी करना पड़ेगा. Shake, correct. Okay, now seems fine. Jyoti, fine. Current data, and we're taking a flag, and then flag filter wala logic you'll need to fix current. Suraj, correct, but this accounting thing, we need to make it dynamic. Chalo, let's do it together, people. All right. So we basically need a function, right, which is gonna take that array and a department, right? So let's create a function and let's call it filter function, right? Now this function is gonna take two parameters. It's gonna take an array and it's gonna take a flag. All right. And from this thing, we have to return basically I'm getting this array and I'm getting this flag. So should I apply array dot filter on this?
तो let n array equals to array dot filter and इसके अंदर we can go and write element equals to this. Right now, how do we want this filter to work? Filter को कैसे काम कराना चाहते हैं? तो basically we want it to return elements if element dot department is equals to your flag. Yes, yes, Vishya correct. But what about this code? Is this fine? Is this fine? So if I go and run this filter function, should I be getting the data of only, let's say, I'm calling it with console.log filter function, and I'm calling it with the data and HR. Do we have to return something from this function? कुछ return भी करना है, right? New array return भी करना है, तो return an array, है ना? And let's see. So if I pass HR, I'm getting array with just HR, right? Let's say if I go and console.log, I'm calling filter function with data and accounting, right? So we are getting that accounting wala stuff. Clear है? Clear है? ठीक है. तो ES6 के function is saving us time from ES5 के function. Can I make it more shorter? एक line में कर सकता हूँ क्या? Can I do this in one line? Okay, ठीक है. So let's say I have a filter function, right? Filter function is there. Let me just comment this one out. Now, this function is gonna take array and it's gonna take a flag. ठीक. अभी क्या करना है? If we manage to write this entire stuff in line 1, we can return it directly. ठीक. So I have this array. If I write array dot filter, right? So I can filter stuff, and ये filter क्या ले रहा है? It's taking this element, right? So if I write element dot department equals to flag, is it still working? Is it still working? Right? So we can even write this, compress this in one line. ठीक है. तो yeah, ES6 के functions के साथ you can do many things. All right, and try to incorporate ES6 के functions everywhere whenever you are creating functions, right? Except for हर जगह use करो ES6 के function, except for when you have to use keywords like this and new. तो कहाँ पे use करते हैं this and new keyword? किस तरीके के functions बनाने में? Constructor and factory functions दोनों में. Factory functions में we need this, and in constructor function we need both new and this. ठीक. तो in our this function it isn't allowed, right? तो हमारे arrow function में this का keyword usage is not exactly allowed. ठीक. Now why is it not allowed? It's a bit tricky thing. Let me try to tell you guys क्या हो रहा है. ठीक. So let's say I have object one and उसके अंदर I have user which is let's say there. ठीक. Now I have a method which is called method one, right? अभी if I go and create this method using our ES5 का anonymous function, I can go and write return this, है ना? So if I go and call this console.log obj1 dot method one, and if I call this, I'm gonna get ये वाला पूरा object because I'm returning this. So this is referring to this entire object. तो एक काम करते हैं, let's do this thing with ES6 का concept, right? So let's create a obj2, and उसमें again we're gonna do same thing, user equals to
only, right? And in here I can just go and create method one, right? This thing has to be colon. मैं जाके मेथड वन क्रिएट करूंगा, बट यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज करूँ, right? And I'm gonna return this. So if I go and do console dot log obj2 dot method one and मैं इसको कॉल करता हूँ, तो which object am I accessing? Am I accessing the ये वाला ऑब्जेक्ट और am I accessing the global object? I'm accessing the global object, ठीक? तो क्या होता है ना कि ये सिक्स फंक्शन इस तरीके से बनाए हैं. We'll understand more of this when we are talking about lexicographical scopes and all. Closure जब आएगा तो we are gonna discuss that in depth. बट अभी के लिए ध्यान दो कि ये फंक्शंस इस तरीके से बनाए थे ES6 वाले, so that they can refer to wherever they have been declared, मतलब कॉल किए गए हैं, राइट? तो am I calling this method in global scope? मैं ग्लोबल स्कोप में इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, राइट? तो ये दिस ना उस स्कोप को रेफर करेगा जिसमें वो कॉल हो रहा है, राइट? तो एवरी टाइम इट्स गोना गेट कॉल्ड इन ग्लोबल स्कोप एंड एवरी टाइम ES6 के क्लास फंक्शन का दिस आपको विंडो ऑब्जेक्ट देता है. क्लियर? तो इसी वजह से वी कांट यूज दिस एंड न्यू कीवर्ड्स विद दिस थिंग. क्लियर है? क्लियर है? तो दिस इज टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ओरिजिनल फंक्शन एंड ES6 वाला फंक्शन, राइट? सो लेट्स से अगर हम ES5 के फंक्शंस पकड़ते हैं एंड उसके प्रो लिखते हैं, प्रोस, तो वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू ES6 वाला? व्हाट्स द प्रोस? इनिशियल फंक्शन के कोई प्रोस थे? वी कैन यूज दिस एंड न्यू, करेक्ट? वी कैन यूज दिस एंड न्यू कीवर्ड विद देम, राइट? बट इसका क्या है? इसका क्या है? वेरी इजी एंड शॉर्ट सिंटैक्स, राइट? तो दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं. यस, राइटलेस डू नॉट, करेक्ट. तो क्लियर है क्या? एरो फंक्शन क्लियर हो गए? प्रोज मींस एडवांटेजेस. तो वी हैव टू थिंग्स, प्रोज एंड वी हैव कॉन्स, राइट? तो कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस. और नहीं पता तो जल्दी पूछा करो ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ऑल. अभी तो बताएं. ठीक है, चलो. तो ES6 फंक्शंस क्लियर है, एंड आर वी गोना यूज ES6 फंक्शन नाउ ऑनवर्ड एक्सेप्ट फॉर व्हेन वी आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस? ठीक है, ठीक है. तो नाउ नाउ अभी सीखते हैं अबाउट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रेस्ट पैरामीटर्स. ठीक. तो लेट्स से I have a add function again, ठीक, and it accepts multiple things, right? ये 4-5 वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर लेता है and it finally returns a plus b plus c plus d plus e, right? या फिर let's just go and print them, right? तो I'm gonna console.log everything. ठीक. तो if I go and call this function add and I'm gonna pass 1 2 3 4 and 5, so I'm gonna print all of them. I'm gonna print all of them, right? तो ES6 में we have something which is called rest parameter. उसमें क्या होता है? If I go in here and if I write dot 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 argument, right? And if I go and console.log that argument now, that argument, I'm gonna get all these things in form of an array, right? Right? And then you can access them based on their index and all. Or if you want, you can run a for loop on it, right? तो this is there just to basically prevent the name वाला issue, right? तो क्या होता है ना कि जब आगे चलते जाएंगे तो we will learn कि we can import and export JavaScript के files, ठीक? तो when that is possible ना, तब क्या होता है, functions एक फाइल में होंगे, उनको कॉल हम दूसरी फाइल में करेंगे, right? तो we are gonna create functions which are gonna, let's say we are calling great functions, उसमें बड़े बड़े we are sending stuff, right? तो let's say we are calling
इसमें हम कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं विच इज नेम्ड एज IDs data, right? Then let's say I'm sending login token or something, right? तो ये सारी चीजें we can just accept it as a REST parameter and we are able to access it. ठीक, yes हर्षित, React component. ठीक, तो हाँ, there this will be very much helpful. ऑल राइट, ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका रेस्ट पैरामीटर. इसमें एक छोटा सा सिंपल सा एक छोटा सा ट्वीक है. लेट्स से इफ आई गो एंड राइट A, B, तो अभी क्या होगा? अभी क्या हो रहा है? तो ये जो A है, इट्स गेटिंग इट्स प्लेस, उसको एक वेरिएबल असाइन हो रहा है, एंड बाकी जितनी भी चीजें हैं दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन एरर, राइट? तो इफ आई प्रिंट A, आर्गुमेंट, आई एम गेटिंग 1 एंड देन आई एम गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं B भी लिख दूं तो पहली दो चीजें हम प्रिंट करेंगे एंड रेस्ट विल बी सेंट इनसाइड दैट एरे. क्लियर? क्लियर? हाँ, तो दैट्स हाउ इट्स डन. रिएक्ट टफ है क्या जावास्क्रिप्ट से? नो, इट्स नॉट. इट्स नॉट, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो ये रेस्ट पैरामीटर समझ आ गया क्या? इट्स जस्ट दैट, और कुछ नहीं है इसमें. क्लियर? क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्प्रेड ऑपरेट. ठीक, तो वी हैव एन एरे, एरे 1, 1 2 3 4 5, and we have an array, array 2, 6 7 8 9 10. ठीक, and I want a final array जिसमें array 1 and array 2 दोनों के कंपोनेंट्स हो. तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? I want array 1 and array 2 also एक ही जगह पर, राइट? तो आई एम नॉट गोना गो एंड राइट दैट एंटायर स्टफ. मैं क्या करूंगा, मैं एरे पकड़ूंगा और उसके अंदर आई एम गोना स्प्रेड एरे 1 एंड आई एम गोना स्प्रेड एरे 2 आल्सो. स्प्रेड कैसे करते हैं? वी राइट 3 डॉट्स एंड उसके बाद वी राइट द नेम ऑफ दैट वेरिएबल जिसके अंदर का एरे या ऑब्जेक्ट हम स्प्रेड करना चाहते हैं, राइट? सो इफ आई हैव डन दिस, इफ आई गो एंड कंसोल डॉट लॉग फिन एरे, राइट? अगर हम फाइनल एरे प्रिंट करेंगे तो नाउ इट हैज एवरी एलिमेंट ऑफ पहला वाला एरे जिसको हमने स्प्रेड किया. यस, उसके बाद लेट्स से इफ आई वांट टू गो एंड इफ आई वांट टू पुट दिस थिंग आल्सो, आई एम जस्ट गोना गो एंड स्प्रेड द अनदर एरे. Now I'm just going to provide all the values in it. ठीक है, and let's say if I want to spread again something, so I can go and keep on adding stuff. क्लियर है? तो स्प्रेड बेसिकली क्या करता है? इट लीव्स द इनिशियल थिंग्स एज दैट एंड बाकी चीजें उसके बाद वो ऐड कर देता है, राइट? तो दिस इज हाउ स्प्रेड वर्क्स. एरे में ऐसे यूज होता है, इवन इन ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज इट. सो लेट्स से कि आई हैव obj1 which has user, right? And let's say it has a flag, right? Just to take, and then we have object 2, right? So in here we have last name and we have password, right? So let's say I want these two objects ke data in one object. How can I do that? Try spreading it, everyone. Try spreading it, not in array. Try spreading it in a new object. You have two things, try spreading it in a new object.
नेट ऑब्जेक्ट फाइनल इक्वल्स टू, हाँ बट ट्राई यूजिंग ऑब्जेक्ट रादर देन एरे. ठीक है अभिजीत, इज इट वर्किंग? ट्राई किया आपने? Although it's correct, that's fine. Right, Karan. So not exactly, you won't need to define the values. Check correct. ठीक है चलो. So what happens, no? You can just go and write let an object and इसके अंदर create an object and उसके अंदर spread your object one and go and spread your object two. Right. So if I go and console dot log fin object, am I getting every key value pair in it in both of those objects? Right. So that works. And इसके बाद भी if you want to add something, some key value pairs, you can go and add. Clear है? Clear है? So that's how we can combine all the values and ठीक. तो how are these things gonna be helpful? Let's say कि आपके पास एक parent object है, right? And उसके अंदर you have stored some data. ठीक. तो you have A1, you have B2, right? And let's say you have to keep the original array as it is and फिर उसको update करना है. ठीक. So you can just go and write एक new array, you can spread your parent in it and you can update it with whatever new thing is there, right? So that works. All right. So things are there, just keep them in mind. Iska mostly use, you won't be doing that much use in your vanilla JS, but जब React वगैरह करोगे ना, तो these things are gonna be very handy, right? Spread करना and all. ठीक है. एनीवेज कॉन्सेप्ट क्लियर है. आई मीन इट्स वेरी इजी, बस ये 3 डॉट लिखना है, देन योर नेम एंड इट्स गोना गेट स्प्लिट, दैट्स ऑल. इजी है राइट? ठीक है. तो दिस इज स्प्रेडिंग. देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग, राइट? तो बेसिकली बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना, दैट्स योर डीस्ट्रक्चरिंग. तो डीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होगा? लेट्स से you have an object, right? Rather object only. And again इसके अंदर you have these values. ठीक. So you have these values and let's say we also have password, right? Which is 1 2 3. Now if I want to use key in this object के keys, तो every time I'll have to go and write object one dot user, something like this, to access that key. Every time. ठीक. तो what happens ना, let's say कि इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा बड़ा नाम, राइट? तो इट गेट्स अ बिट मेसी कि बार बार आपको ऑब्जेक्ट लिखना है एंड देन यू राइटिंग दिस. तो हम क्या करते हैं, वी क्रिएट एक स्टफ देयर, ताकि हम एक ही बार में सारी चीजें नोट कर दे. और उसके बाद लेट्स से कि हम यूजर लिख रहे हैं, हम फ्लैग लिख रहे हैं और हम पासवर्ड लिख रहे हैं, एंड एक ही बार वी कैन गिव इट अ वैल्यू, राइट? तो अभी क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स. ठीक. तो once you have done that ना, you can go and directly use those key value pair without writing object one dot user and all, right? तो अगर directly भी user लिखोगे, you can print that value. You won't have to write object dot again and again. Yes Harshit, it is. ठीक. So this thing is very helpful when you're using component based frameworks. ठीक है. इफ आई हैव मेनी ऑब्जेक्ट देन, तो मेनी ऑब्जेक्ट उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ गो एंड डिस्ट्रक्चर देम. ठीक है अभिजीत, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के सेपरेटली उसको कर दो. ठीक. नाउ लेट्स से इफ आई टेक दिस आउट एंड उसको मैं लास्ट में रख देता हूँ,
So do you think there will be some error or we are still gonna get that valid? Let's say यहाँ पे ले जाके if I put this, I'm still getting that error, right? तो ये क्या check करता है? It basically checks the name of your variable, right? So if that name matches with the key, it's gonna assign that specific value, and you won't have to write object one dot user, object one dot flag, password, ऐसा कुछ you would have to do that, right? तो again making things easy, right? तो ES6 के अपडेट का मतलब समझ आ रहा है? It was just there to help you write less code. ठीक, एरे गो विद इंडेक्स, एरे अभी बताता हूँ, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन restructure an object. ठीक, but can we destructure arrays also? Arrays also, let's see. So let array, and we have an array which has like some values, right? So if I want to destructure it, let's see. यहाँ पे हमने destructure करने के लिए object यूज किया था, तो let's go and destructure it by using this, and let's see, I have d and if I have e equals to array, right? So let's see, if I go and do console dot log a, am I getting the a ka value whatever I have assigned it, right? Right, where is key value on new method? New method matlab, Rahul, can you clarify? New method as in where is keys? In this one or ये वाले में, initial वाले में? 193. All right, तो यहाँ पे method, like you want me to create a method? The keys are in here. यहाँ पे आपने उन keys के नाम एक बार लिख दिए, and then this is basically destructuring them, right? So once you have done this phase, you can use them without writing object one dot that. How to get value? Exact name लिखो जैसा key का name लिखा हुआ है, ठीक है? So that's how you can destructure an object, and if you want to destructure an array, you can go and do this, right? Can we get keys by destructuring values? Not exactly, no. So this is basically assigning the values, right? So if you have values, you won't be able to assign some key, right? That doesn't works that way. All right, one more thing. यहाँ पे एक चीज बताने दो. So let's say if I remove this a and if I put it here, so now the a का value will see कि it's getting as 5, right? तो यहाँ की तरह the value is not getting preserved, it's based on index. तो जिस तरीके से the things are present, you're gonna get them as that way, right? That's why the destructuring of array is not very helpful, right? उतना भी कोई help नहीं करता है. This object destructuring, yes, that helps. ठीक, so let's say कि I have a mini object inside this object also, right? And it has values of a1, b2 and c3. अब इसको कैसे destructure करेंगे? So if I go and access mini object and if I print, let's say if I do console dot log mini object, so am I getting that object once I've destructured it? Yes. Yes. Guys, clear है कि नहीं है? This destructuring of object, is this clear? Right. तो इसके अंदर I have created one more object. So how can I destructure this object also? Should I go and do something like this? A comma b comma c equals to mini object. So if I go and do console dot log a, now I'm getting a का value. Makes sense? Makes sense? Makes sense? Right? Right? Else, what you can do is you can
destructure it here itself. यहाँ पे क्या करोगे, that many object is a key, right? So just write it as a key and इसके अंदर destructure your values. ठीक. So we have let's see. Hmm, many object is not defined. Mhm. Hmm, uh, I mean, we can, but I'm not sure why I'm not able to do it here. So you have A, B, and C. Write in reverse. No, we won't have to actually. I think ये वाला A error दे रहा है. We have many object and then I'm destructuring it. ठीक है. ठीक है, तो this thing is giving access to A, B, and C, but फिर again we are destructuring it, so we should have gotten the value. Okay. अभी क्या हो रहा है? Once I have destructured this mini object, right? तो I'm not keeping any value there, right? So I should go and just directly print the values. The values we are gonna get. Okay, so if I go and write B and C also, we are gonna get those values, right? So that's not enough. क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो उसे कैसे डिस्ट्रक्चर करना है गाइस? ठीक. ठीक है, तो अभी के लिए ES6 के बेस्ड पे वी जस्ट हैव टू नो दीज पर्टिकुलर स्टफ. एक और छोटी सी चीज है एसिंग अवेट, वो जब प्रॉमिस फिर से डिस्कस करेंगे ना तब बताऊं. बट इतना बात क्लियर है कि ES6 हाउ it's being used to shorten your code and all. So far, any doubts? No? ठीक है, तो एक काम करते हैं. लेट्स एरे के अंदर एरे हो तो बेस्ड ऑन इंडेक्स यू विल हैव टू डिस्ट्रक्चर, राइट? अगेन वही तो इशू होता है कि इट डजंट मेक्स मच सेंस फॉर दिस थिंग बट इट्स प्रेजेंट, सो इट शुड, राइट? ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग, यस दैट मेक्स सेंस. कैन वी यूज डिस्ट्रक्चरिंग इन जेसन फॉर्मेट? यस यू कैन. ऑलराइट, ठीक है. सो हैव अ ब्रेक ऑफ 4 minutes एंड देन उसके बाद we'll try to create an application but purely based on ES6 के syntax. All right. So yeah, get back at 5, everyone.
All right, everyone back. Hello guys, are you guys back or not? आ गए कि नहीं आए? हाँ, ठीक है। तो एसिंक अवेट भी एक सिंटैक्स है which we need to learn. So I hope कि ऊपर कोई डाउट नहीं है, राइट? ऊपर किसी चीज में डाउट नहीं, ठीक? चलो, तो एक काम करते हैं, लेट्स विजिट फेच स्टोर एपीआई एंड वहां से कुछ डेटा फेच करते हैं, ठीक है? सो लेट्स से आई वांट टू फेच दिस डेटा, तो आई एम गोना कॉपी, I'm not gonna copy, we're gonna write. So I'm just gonna copy this URL. ठीक है? So I have this URL, let URL equals to this, and I have to make a fetch request. क्या क्या करना है मुझे? Quickly tell me. I have to make a fetch request. Should I provide URL in here? Right? What's this piece of code gonna return me? Line number 216 क्या return करने वाला है मेरे को? Specifically क्या return करने वाला है मेरे को? नहीं, डेटा नहीं रिटर्न करेगा. Promise object, right? So it's gonna basically return you a promise object, right? So I'm gonna go for a then, right? That's how we deal with promise. So हम क्या करेंगे? We're gonna go with then. Now I'm using arrow functions inside this, right? तो res में जब हम dot then लिखते थे, उसके बाद we basically got this res and we were returning it with res dot json. Right? So this res.json again was a promise in itself, right? तो हमें फिर से उसके साथ डील करना है, तो we'll see that यहाँ पे I can just go and write res.json directly. किसी को कोई इशू है? मैं ऐसे लिखता हूँ तो कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है. तो नेक्स्ट लाइन में I can just go head dot then and I'll go and write a res again, and if I go and just console dot log this res, we are gonna get this state. ठीक. अच्छा, अब ये सोचो, ये तो हमने अपना कोड छोटा करके लिख दिया जैसा मैं वैसा. दिस थिंग इज रिटन इन जेएस, राइट? SD2 के अंदर अंडर ये कोड लिखा गया. फिर एक नया SD1 हायर हुआ, वो बेचारे ने अभी तक पाइथन में काम किया, ठीक? तो ही स्टार्टेड लर्निंग जेएस, राइट? बट उसकी नजर पड़ गई इस कोड पे. पहली नजर में एनी आइडिया कि दिस कोड इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पता चल रहा है क्या? एनी आइडिया कि ये कोड सिंक्रोनस चलेगा, एसिंक्रोनस चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं, राइट? तो एसिंक फंक्शन के साथ एक दिक्कत हो रही है, रीडेबिलिटी कम हो रही है, राइट? तो दैट रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही वी हैव implemented something in ES6 जिसको बोलते हैं async and await. ठीक? So it's nothing. जब भी let's say you have a function in which you're fetching this data, right? तो let's say I'm writing a function which is called get data. उसके अंदर I'm basically fetching this data. तो मैं क्या करूँगा? I'll tell JavaScript or the users of JavaScript कि this function is gonna be async. राइट? ये फंक्शन एसिंक्रोनस होने वाला है. तो एसिंक इज बेसिकली अ कीवर्ड व्हिच इज अप्लाइड बिफोर द फंक्शन सो दैट यूजर नोस कि दिस फंक्शन इज गोना बी एसिंक टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक? एंड इसके अंदर आई एम गोना टेक दिस एंटायर स्टफ एंड आई एम गोना जस्ट थ्रो इट इन देयर, राइट? एंड आई कैन गो एंड कॉल दिस गेट इट, ठीक? ठीक. तो दैट्स फाइन एंड ऑल, बट फिर वही बात है कि रीडेबिलिटी इज स्टिल नॉट देयर जिसको हमें फिक्स करना फेच के साथ, ठीक? तो हम क्या करते हैं, रादर देन गोइंग फॉर दिस अप्रोच वी गो एंड डू लेट res इक्वल्स टू वी अवेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पेसिंग फंक्शन. तो हम जाके लिखेंगे फेच URL, राइट? तो बेसिकली वी आर कॉलिंग अ प्रॉमिस अंडर दिस थिंग एंड वी आर अवेटिंग दैट प्रॉमिस टू गेट फुलफिल्ड, ठीक? once that promise has been fulfilled, हम क्या करेंगे, we're gonna create one more thing. Let's say I'm gonna call it data and I'm gonna await it once again. क्यों? क्योंकि this res
is gonna get the value of this promise, and usko we need to convert it into JSON, right? So I'm just gonna write res.json and I'm gonna call it. Now, is this value usable? ये चीज it's gonna return your data. We don't have to call any promise on that. Take, so if I go and do console.log data, I'm still gonna get that data. But the code gets a bit more readable, right? So users are gonna get know कि this function is gonna be async, and इसके अंदर there are two places where we are awaiting response of some promise. ठीक, तो बेसिकली async await is there for nothing different, कोई अलग concept नहीं है, it's just there to increase readability, that's all. Make sense? Make sense? So going forward we are gonna go for async await also. Sir, first await का use बता दीजिए. Await is there to tell you guys कि we have a promise which has to be fulfilled, right? Promise हो गया, और let's say asynchronous program है यहाँ पे, right, which will fulfill in some times. So please wait the response. Await, right? Await का literal meaning ही होता है wait. Please wait. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली async await, नथिंग एल्स. ठीक, तो ये तो हो गया हमारे ओरिजिनल फंक्शंस में, राइट? नाउ इफ आई वांट टू डू दिस एग्जैक्ट थिंग इन ES6, मैं क्या करूंगा? आई एम गोना गो फॉर लेट गेट डेटा, एंड उसके बाद दिस थिंग इज गोना बी दैट ES फंक्शन, राइट? तो मैं इसके पहले ब्रैकेट्स के पहले आई एम गोना अप्लाई माय एस, राइट? एंड एवरीथिंग इज गोना बी सेम असाइड फ्रॉम दैट. ठीक, तो उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है. This thing and this thing. ठीक, and I'm just gonna call this get repeat. ठीक, so only use it with fetching data? No, not exactly. This await is there to help you guys with any asynchronous program, right? So maybe try writing set timeout also, that will do. ठीक, it's just there to increase readability, that's all, nothing else. ठीक है, so let's do one thing. Let's try to apply all these things in an application. ठीक, तो हम ये fake story use कर लेंगे and we'll create a basic ecom type application. ठीक, तो let's do that. So create function and ES6. And let's create a product page dot js, and let's create a product page dot css. ठीक है, तो product page dot html, this is there. Now let's quickly connect all the stuff. So in here I want my script, and uska src is gonna be page.js, and I'm gonna link the CSS here. So link, and in here what we're gonna do is style sheet, and then we're gonna pay step will be your product page.css. ठीक है, so in this body we need a navbar, so we're gonna create a navbar, right? Or let's do it section only, and that we can keep them as navbar. And then we need a body which will be your container for products जो कि हमें लेने हैं, right? So let's name it container, and let's name it class. ठीक है, and let's quickly run this thing. All right, ठीक है. So container पे we are basically gonna access or fetch data from this API fakestoreapi.com. So let me just show you guys कि कौन सा data हम fetch करने वाले हैं. This we're gonna fetch this data and we're gonna show it inside our container. तो पहले वो करते हैं छोटा सा काम.
and then we'll discuss later. Take, so let's first access our container, and I can go into container equals to document dot query selector, and I'm just gonna access my container. Take, now I have a function which says get data, and in this function, I'm gonna call that fetch with this thing. So I should be using async await with that. Async await use करना चाहिए, right? So should I apply async in this function? Guys, I need 1 and 0 every time. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग सो रहे होगे क्या अभी. ठीक, अगेन जब भी मैं एप्लीकेशन में आता हूँ देन ओनली आई एम गोना कोड, राइट? आपके साथ कोड करने का टाइम नहीं रहेगा, सो प्लीज हेल्प मी. ठीक, तो लेट्स क्रिएट अ गेट डेटा फंक्शन, राइट? एंड उसको वी आर गोना मेक इट async. ठीक, and in this function I'm gonna get data from this URL, right? So I'll be writing my promise. So how can I handle that using await? Everyone please try it. दो line लिखने, लिखो. We need to write 2 lines of code. First thing will deal with promise of URL, and second thing will deal with promise of JSON data. Return new promise. No, we don't need to write that. Remember, let response equals to await, and we call the fetch, right? So I have this URL. I'm just gonna write let URL equals to this. This. So I'm gonna paste it in here, and I'm gonna write that URL. Right? So ये तो हो गया dealing with the first promise. Right? How can I deal with the second one? So I can go and do a res.json, right? So let data equals to res.json. Now this is gonna give me the second part of the data, right? And उसके बाद I can use this data to show it on my browser, right? तो ठीक है, let's create a function which is called show data, and उसके अंदर we are sending this data, right? So let show data, and it's gonna accept your data array, and इसके अंदर we are gonna run our for each and all. ठीक, तो या await नहीं किया हमने, तो we'll need to await it also. ठीक है, तो let's open our inspect also so that we'll see if we are getting the data or not. So I should be console.log show data. ठीक, but this data should get appended as soon as the browser loads, right? जैसे ही browser load होता है वैसे ही the data should get appended to it. Is it showing anything on console? No. How can we do that? As soon as I load my browser or refresh it, I should be getting the data. Event listener on load won't need that. Correct. So I can just go, and can I not write get data? So this function is gonna run as soon as this entire thing is run, right? So let's I'm not writing data array, so let me write data, right? So as soon as this page loads, I'm gonna load this data. Yes. So should we append the data in here? Right? So let's do that. So let me see how we are getting the data. So basically we have a category. We have I don't know other categories. Okay. So we have category, and we have some description, we have image, and we have price. So let's go with image, price, and category. ठीक, because title seems a bit longer than we are expecting. ठीक है, तो let's take this data array and let's run a for each one. Take, now we can use arrow functions, and yeah.
अब इसके अंदर फर्स्ट विल नीड टू क्रिएट अ डिव, राइट? तो बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखना है। वी हैव आवर प्रोडक्ट पेज, उसमें आई एम गोना क्रिएट अ ग्रिड ताकि हम तीन तीन पीसेस में डेटा दिखा सकें, राइट? सो यहाँ पे दो ही बनाए, बट समथिंग लाइक दिस, शो डेटा समथिंग लाइक दिस, राइट? राइट। सो filter category, all right, done, we'll try it। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ, शुड आई क्रिएट सेपरेट divs फॉर देम, फॉर ईच एंड एवरी आइटम? सेपरेट div, सेपरेट div, नो, व्हाई? सेपरेट div बना के उस div में we are gonna append image, title and all, right? तो let's create a div for this thing। हर एलिमेंट के लिए एक div बनाते हैं, and उसके अंदर we are gonna append items, ठीक? तो लेट्स क्रिएट अ div। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर div, राइट? एंड डेटा में क्या क्या था, फॉरगेटिंग इन एवरी टाइम, तो लेट मी जस्ट कंसोल डॉट लॉग डेटा array and let me just get this thing। So we have a category and all, so let's have image, right? So image document dot create element, right? We have to create image, and how do I give image src? Image को source कैसे मिलता है? It's an attribute, right? So just access that element and use it as it is, right? So now it's gonna be element dot image, right? I'm gonna write ele dot image. Yes, yes, ठीक है। Then let's create p with document dot create element, and इसके अंदर let's create a p, and let's add category। तो इसको category ही नेम कर देते हैं, right? Now category dot inner html equals to element dot category, right? And let's add price also। So let price equals to document dot create element, let's go for p, and price dot inner html equals to element dot price। Take, now it's time to append everything। So I'm gonna append each and every element inside this div। So इस div में I'm gonna append image, I'm gonna append category, and I'm gonna append price। ठीक, तो finally this div also should be appended somewhere। कहाँ पे append होगा div? बॉडी में या फिर कंटेनर में, राइट? तो आई एम गोना पिक दैट कंटेनर, container dot pend, and I'm gonna append this, right? तो ecom is undefined, why so? Let's refresh। तो data we are getting, but image is not getting fetched। Let me run another server। इधर image, image dot src, अच्छा हाँ, it's image, correct। ठीक है, तो although I'm not sure why image is not loading me। फिर से नाम गलत दिखाएगा, it's image, right? तो element of image, key is not image, okay, this is image, right? ठीक है, अभी लोड हुआ, तो these are a bit big image, that's why we are getting the error।
Okay, so let's fix the images. The images are too big for here. So page, we wanna access the container, right? And container ke andar we are creating divs, and inside that div, I want the image sizes. So uske liye, let's do one thing. Let's first go in this container and let's give it a display of grid. Right, and let's go with grid template columns. Repeat one fraction with or so think it's getting applied, but ये थोड़ा बड़ा हो रहा है. So, yeah, let's fix that. Image, we can make the width to be like 80%. Thick, that's fine. And we can give this thing a gap. So let's say 20 pixel ka gap dete hain. And dot container and multi-layer. Let's give them so one pixel. So that, yeah. All right. And in here, I can just do text align center. Okay, so that works. Right. So as soon as this page is loading, I'm showing all my data on my home page. Okay. This is clear. This is clear. Right. And we have used ES6 syntax for that. Right. All right. So now I have used category because one of you guys said ki let's go for filtering, right? So I'm going to filter it based on category, right? So let's say ki I just want men's clothing wala data, right? So I should be able to get that piece of code, right? So first thing first, how can I achieve that if I want to sort just by men's clothing? We have seen that abhi thodi der pehle when we were sorting it based on department, filtering it based on department. Right, so we can take ye wala array and we can filter it up according to this department. Will that filter the data? Kar sakte hain, right? We have seen it abhi dekha tha when we were doing that department wala thing. Remember or not, guys? Come on. Right, so now we can either go for this approach or the API should have something. So again, API ke documentation, I hope you guys have started reading. Jo bhi API milta hai, first go through its documentation, right? So this sorting and filtering thing should be there in documentation itself. We'll just need to find it. So let's say we are in here and in there. I want to okay, let's go with this thing, user based sorting. Not this. Should be somewhere here. So yeah, get all. Okay, so yeah, this is it. So we can filter things based on this thing, right? So we have categories. Agar main, let's say if I have this category. So if I go and write this, I'll be only accessing the data which has category jewelry. Right? If I make it, let's say if I make it as men's clothing, let's see. So if I go and do that, yeah, so we are getting all the categories with men's clothing. ठीक, so we'll need to make one more API call, and वो API call कैसे होगा? It's gonna be dynamic API call, ताकि let's say if I have this URL, right? No, where's that URL? This one. If I have this URL, this should be dynamic. So we can make a URL dynamic, right? Right? We can just go and do this thing. So if I go and do that category, we can do that.
है ना? तो वी कैन मेक द कैटेगरी डायनेमिक, बट उसके पहले वी नीड टू मेक अ ऑप्शन फ्रॉम वेयर यूजर कैन सेलेक्ट द कैटेगरी. यस, पहले तो यूजर को यूआई देना पड़ेगा ना कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करो, एंड देन ओनली वी शुड मेक ऑल दीज डिसीजंस, राइट? So should we go and add maybe select tag in this application so that we can show users that? Yes, no, guys, जगे हो गए people? ठीक, ठीक, ठीक है. तो now here's one more thing about APIs. APIs जो है ना वो extensively data देती है, right? तो you can get as much data as you want from API. तो we'll see कि we have an option, इसके just ऊपर we have an option which says get all categories. So if I fetch this URL, ये क्या देगा in response? It's gonna give me an array of entire categories that is present inside that database, right? तो now anyone getting an idea कि अगर हमारे पास categories का array है, then we don't even have to write HTML में जाके select tag. We can create select tag from JS itself. Anyone? Is there anyone who can think about that? चलो करते हैं. ठीक है. हाँ, that's fine, not an issue. ठीक है, तो let's do one thing. Let response 2, and I'm gonna await one more fetch, and इस fetch में हम basically categories मंगा रहे हैं, right? So I'm gonna get all the categories, right? Let me get this thing and let me store it somewhere here. So let category URL equals to this thing. Okay, so now in this another fetch, I'm gonna go for category URL, and this will be res2. So let categories equals to await res2 dot json. ठीक, तो मैं डेटा भी भेजता हूँ, and I'm gonna send categories also. ठीक, let's go and check कि हमें डेटा में क्या मिल रहा है actually. So if I go and inspect this, and okay, so ठीक है, तो we are getting that data array. Let's accept categories also, and let's print categories. ठीक, तो हमें कैटेगरी का एक एरे मिल गया है ना. फॉर व्हाट वी हैव क्रिएटेड अनदर फेच फॉर गेटिंग ऑल द कैटेगरीज प्रेजेंट इनसाइड दिस एपीआई. उसके लिए हमने एक अनदर फेच बनाया. क्लियर गाइज? पता चला व्हाई वी डिड टू फेच और नॉट? एक फेच इज कॉलिंग आवर डेटा फॉर showing everything, and एक fetch is there to call for data of all the categories present inside this website. ठीक है. Now both element compare and filter, no, it's much more easier than that. filter use ही नहीं करना पड़ेगा. देखो, I'm getting this categories data ना, तो पहले तो मेरे को I'll need to create that select tag, right? So ठीक है, after this thing let's create that select tag. We can do it before also. So यहाँ पे categories dot for each, and इसके अंदर I'm gonna go and element equals to. अच्छा, before I start doing this another for each, guys, everyone is in loop कि हम क्या कर रहे हैं, right? Because I can see people are dropping off. तो जितने हो बताओ, अभी तक समझ आया क्या कर रहे हैं? We haven't done much. We have just fetch the data, show किया है. उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन में हमने एक और fetch लिखा और उसमें हम basically एक और select tag get कर रहे हैं. ठीक, now I could have gone and created that select tag in HTML, right? यहाँ पे जाके I would have created a select tag and उसके अंदर I have gone and written options. ठीक, बट फिर क्या होगा ना कि हम जो बातें करते हैं कि हमें डायनेमिक वेबसाइट चाहिए, इट वोंट बी देयर. व्हाई? जाके इफ आई राइट मेंस क्लोथिंग इन दिस,
राइट। एंड मान लो बैकएंड वाले पीपल ने वो गए एंड दे एडेड सम मोर कैटेगरीज, तो आई नाउ हैव टू गो एंड HTML पे जाके मुझे नए ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। यस नो? यस, राइट। तो रादर देन गोइंग फॉर दिस अप्रोच, मैं क्या करूंगा, आई मेक दैट ऑप्शंस डायनेमिक। तो जितने भी एरे में एलिमेंट्स होंगे, आई एम गोना क्रिएट दैट मेनी सेलेक्ट टैग एज इट इज। ठीक। तो जितने सेलेक्ट टैग है वी आर गोना क्रिएट इट हियर इटसेल्फ। राइट, तो ठीक है, लेट्स क्रिएट अ सेलेक्ट and this select will be document dot create element, right? And this will be select tag. Now in this select tag we want options. सर हमें FALE API को fetch करना है अभी, wait fetch को भी, तो yeah, async await is used for fetching only. ठीक। basically do you guys ever heard about something that is called syntactical sugars? ये सुना है क्या, ये नाम, ये टर्म? नो? तो ये सुनोगे, व्हाई these things are there for giving bit detail of your things that you're doing, right? तो ये बेसिकली इनके कोई यूसेज नहीं होते, बट दे आर जस्ट फॉर देयर टू डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि वो कोड कर क्या है। ठीक। तो यू कैन कीप एसिंक एंड अवेट अंडर सिंटैक्टिकल शुगर की कैटेगरी। ठीक। उनका एज सच कोई पर्पस नहीं है, बट टू लाइक गिव अ ब्रीफ अबाउट कि हाँ ये फंक्शन एसिंक है एंड इसके अंदर सम एसिंक प्रोग्राम इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि ये भी काफी सुनोगे सिंटैक्टिकल शुगर्स व्हेन यू आर गोना लर्न फ्रेमवर्क्स एंड ऑल। ठीक। तो चलो यहाँ पे नाउ लेट्स क्रिएट ऑप्शंस, राइट? तो ऑप्शन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड दिस थिंग इज गोना बी योर ऑप्शन, राइट? एंड ऑप्शन के अंदर हमें दो चीजें दोनी होती है, राइट? इफ यू गाइज रिमेंबर, ऑप्शन टैग हैज टू थिंग्स। एक तो इनर HTML होता है उसमें, तो लेट्स से कि दिस थिंग इज दिस, एंड देन वी हैव वन वैल्यू इन इट, रिमेंबर? एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग, याद है गाइज? 1 0, ताकि मुझे भी पता चले आप सोए नहीं हो, नहीं तो चलो एवरीवन एंड द सेशन एंड सो जाते हो, राइट? प्रेजेंट हो, ग्रेट। ठीक है, तो आई कैन गो एंड राइट ऑप्शन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू माई एलिमेंट एंड ऑप्शन डॉट वैल्यू ऑल्सो इज इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है, तो आई एम बेसिकली क्रिएटिंग डायनेमिक ऑप्शंस बेस्ड ऑन जितने भी कैटेगरीज प्रेजेंट है इस API में, एंड आई एम क्रिएटिंग अ सेलेक्ट टैग। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सेलेक्ट में जाके इन ऑप्शंस को अपेंड करना, राइट? तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोना गो इन सेलेक्ट एंड आई एम गोना अपेंड माय ऑप्शन। ठीक है, एंड नाउ फाइनली दिस ऑप्शन, दिस सेलेक्ट टैग, इसको भी कहीं पे हमें अपेंड करना है। ठीक, तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ nav bar एंड nav bar में लेट्स कीप दैट अपेंड नाउ। ठीक, तो वी हैव दिस nav bar, लेट मी एक्सेस दैट। let nav bar equals to document dot query selector and nav bar, and एक काम करते हैं, let's fix the CSS for this thing also. तो I'm gonna access my dot nav bar, and of course nav bar create करने के there are 4-5 steps you guys already know. What's the use of option value? I'll tell you, take a second. So let's keep the width as 100% and let's give them a padding, let's say rem हर तरफ से, और left right से let's give them 2 rem, and position make it fixed, background color teal, and top 0, left 0, and और क्या करना है, वी नीड टू गिव कंटेनर सम वैल्यू, राइट? ताकि वो ऊपर से एवरीथिंग इज विजिबल। तो मार्जिन टॉप एंड दिस विल बी लेट्स गो विद 5 rem. ठीक है, तो वी हैव अ nav bar in our web page also, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सेलेक्ट टैग को लाके nav bar में अपेंड करूंगा। सेलेक्ट इनलाइन है कि ब्लॉक है?
select tag, inline level element और block element. Anyways, एक काम करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर पर, ठीक है. चलो विल सी अभी पता चल जाएगा. I'm gonna go and I'm gonna pick navbar and उसमें navbar dot append. मुझे हर बार नहीं करना पड़ेगा. I'm just gonna go and do it once. यहाँ पे navbar dot append. ठीक है. तो इसी जैसे ही वेबसाइट लोड हो रहा है, वी आर गेटिंग दैट सेलेक्ट टैग डायनेमिकली एंड उसके अंदर ऑप्शंस ऑलरेडी है. तो मान लो इफ यू द एपीआई इज गोइंग एंड अपडेटिंग द कैटेगरीज, नो, तो आपको क्या, आपको HTML में जाके यू वोंट हैव टू अपडेट दीज कैटेगरीज. इट्स ऑलरेडी अपडेटेड क्योंकि आपने कोड ही डायनेमिक वे में लिखा है, राइट. तो दिस इज हाउ वी शुड बी थिंकिंग कि कुछ भी हो जस्ट मेक इट डायनेमिक, राइट. तो इसी HTML में कितना सा कोड लिखा है एंड क्या क्या हो रहा है पेज में, राइट. तो जब फ्रेमवर्क लिखोगे ना, तो कोई भी फ्रेमवर्क में देयर इज वन index.html फाइल, राइट. भले ही जाओ आप एंगुलर पे करो काम, व्यू पे करो काम या रिएक्ट पे करो काम, जो कि आप अब करोगे बाद में, ठीक. तो उसमें एक index.html फाइल होगी और वो कुछ इतनी सी ही होगी, बाकी चीजें आप JS में ही करोगे. यहाँ कैटेगरी मिल गई, अदर एपीआई में कैसे मिलेगी? हर एपीआई में देयर इज गना बी दैट थिंग, आपको पढ़ के उसको खोजना पड़ेगा, राइट. और जब आप बैकएंड लिखोगे ना, तो आपको भी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस तरीके से एंड पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे ऐसे यूज करो. क्लियर? क्लियर. तो जैसे इस एपीआई के कुछ डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको देख देख के हम समझ रहे हैं कि हमें क्या फेच करना है, क्या गेट करना है. आप भी वैसे ही हर एक बैकएंड का एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पढ़ोगे. ऑलराइट. इज दिस, अभी हमने वी हैवंट अप्लाइड दैट कैटेगरी, राइट. अभी तो हमने बस इसको अपेंड किया है, राइट. इसके क्लिक करने पे यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो तो अभी करना बाकी है. ठीक है. तो शैल वी ट्राई टू अप्लाई दैट ऑल्सो, ट्राई टू अप्लाई दैट ऑल्सो. ठीक है. ठीक है. तो पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि लेट्स डू इट इन HTML पेज. I have a select tag, right, and we don't have much time also, तो ठीक है. I have select tag, इसमें option 1 है and we have value as 1, right. And then I have option 2 and उसका है value 2. तो let's say कि जब मैंने 2 पे क्लिक किया, I want to access the value of this 2. How can I do that? Select tag में कैसे होता है? Event. तो मान लो if I'm accessing this in my JS site, so I'm gonna do select dot add event listener, right. And what's the event in select tag? Select tag में कौन सा event होता है? Is it click, change, right, right. तो change event होता है, ठीक. अब जब भी हम change कर रहे हैं, हमें एक फंक्शन रन करना है, एक फंक्शन रन करना है. और ये फंक्शन का क्या पर्पस है? फंक्शन का ये पर्पस है कि एपीआई में अगर हम कैटेगरी के बाद ज्वेलरी पे क्लिक करते हैं, राइट, तो वी कैन एक्सेस जस्ट दैट पर्टिकुलर डेटा. तो हमें क्या करना है, जब भी ये फंक्शन रन कर रहा है ना, वी आर गोना कॉल दिस फंक्शन एंड इसके अंदर हम फेच मारने वाले, राइट, बट विद दैट डायनेमिक यूआरएल, राइट. तो जैसे ही बटन पे क्लिक किया, हम ये वैल्यू गेट करेंगे और इस यूआरएल में हम जाके वो वैल्यू पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एंड में, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू अपडेट दैट, ठीक. तो ये करने का ट्राई करते हैं इन आवर जेस पर. ऑलराइट. तो यहाँ पे आई हैव अपेंडेड ऑल दैट स्टफ. मेरे को इवेंट कहाँ लगाना चाहिए? सेलेक्ट में कि ऑप्शंस में? सेलेक्ट में, राइट. तो आई एम गोना गो इन हियर एंड सेलेक्ट में select dot add event listener and that event should be changed, right. And हम इसके अंदर फिर से फेच मारने वाले हैं. तो आई एम गोना मेक दिस थिंग async, right. And there you go, right. अब एक काम करते हैं, just for now let's just console
I'm gonna access the event here, right? And let's just console event dot target dot value. इसो कि हम ऑप्शंस को वैल्यू दे रहे थे दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, राइट? एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द पेज एंड लेट्स सी कि व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? एंड so if I go and click on men's clothing, I'm getting men's clothing, right? And if I click on this, I'm getting that. And if I click on electronics, I'm getting electronics. ठीक, तो ये वैल्यू मिल रही है by doing event dot target dot value. That's great. Let's store this value somewhere. Let value equals to that, and let res equals to await, and we are gonna go and do a fetch. एक fetch करने वाले हैं, and that will be on this URL. ठीक, so it's gonna be on this URL. Let me just zoom it out a bit. Chalo. So we are getting the value based on our select tag. So should I update this based on that value? Right? ताकि हम fetch मार सके. So I'm gonna go and update this as value 20. बंद कर दे. Sorry guys. ठीक है. क्या कर रहे थे हम लोग? वैल्यू, राइट? हमें वैल्यू प्रिंट करनी है. ठीक, तो I'm gonna get that. Let me get the data, and this will be your filtered data, right? Equals to await, and यहाँ पे I'm gonna do res.json, and पहले let's go and console.log this filtered data. ठीक, पहले कंसोल करके देखते हैं. उससे पहले अभी मैंने जूम आउट कर रखे. एनी डाउट्स कि हमने किया क्या है, आउटपुट क्या आएगा वो देखेंगे, बट लॉजिक क्लियर है ना हम क्या कर रहे हैं पीपल, राइट? तो सो फार हमने एक सिलेक्ट टैग बनाया और उस सिलेक्ट टैग में हमने ऐड इवेंट लिस्नर ऐड किया. ठीक, उस इवेंट के अंदर हमने डाला चेंज, एंड चेंज के अंदर हमने एक एसिंक अवेट सेटअप बनाया, जिसमें हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये वैल्यू को कॉल किया इनसाइड दिस थिंग, अ डायनेमिक यूआरएल. ऑलराइट, तो चलो देखते हैं इफ वी आर एक्चुअली गेटिंग द कैटेगरी डेटा और नॉट. ठीक, so let's go and click on jewelry. So yeah, we are getting some data, and let's see, all of these data has category jewelry, right? So yeah, that works. ठीक, await क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि if someone is reading this code, they'll know कि we are awaiting some response from this piece of code. ठीक, syntactical sugar है, it's just there to give you a detail about your code, that's all. We can target, since in this we can target option dot inner text means value and inner text are same. Not exactly, Santosh, not exactly. So the inner text is this thing, right? And the values are this thing. ठीक, those are specified in your option के अंदर, right? Rest में yeah, you can do that, but for option it would be more viable कि you go and update it based on this value. All right, take it. So now the next step is to update UI based on this data. How can I do that? UI को कैसे update करूंगा based on this data? I'm getting an array. Can I again call this show data function with this array? With this array. ये पूरा show data call कर दो. So it's gonna get this filtered data as a new array, and categories maybe we can pass a empty array in that. Let's see. It's a long shot, but let's filter data, and इसके अंदर let's pass just an empty array. ठीक है, तो let's say if I'm clicking on jewelry, right, we are messing things up. So
एक सेकेंड, एक सेकेंड, let's close this. तो ज्वेलरी इज देयर, बट या कंटेनर क्लियर करना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट. तो ओल्ड डेटा वी नीड टू स्क्रैप द ओल्ड डेटा आउट. यस यस, तो ठीक है, वो करते हैं. व्हेन वी आर रनिंग दिस, वी वांट आवर navbar dot inner text to be clear, and we want our container dot inner text to be clear. ठीक है. So let's say if I'm going for this thing, I'm getting that, right? And if I इस पे empty URL नहीं भेजना है. hmm नो, नॉट navbar, बट navbar क्लियर नहीं करेंगे. ओके ठीक है, चलो आपके बात मानते हैं, लेट्स कीप navbar. एंड कैटेगरीज में एरे भेजना पड़ेगा. दैट्स अ इशू. कोई नहीं, विल नीड टू एक्चुअली कॉल दिस थिंग वंस अगेन. तो ऑल राइट, फाइन, लेट्स डू दैट. Let's do that. ठीक है, and now I can send this category over. ठीक है. तो let's see अभी if I go and update this, तो categories अभी अपडेट करते हैं. ठीक है, तो इट्स गेटिंग अपडेटेड. बट देखो, हमने नैव बार क्लियर नहीं किया, तो वो नया सिलेक्ट टैग फिर से बना रहा है और फिर से नए सिलेक्ट टैग को अपेंड कर रहा है, राइट? तो कंटेनर भी क्लियर करोगे और नैव बार भी क्लियर करोगे, राइट? ताकि हम मल्टीपल सिलेक्ट टैग्स ना. तो इफ यू डू दैट वे, नाउ यू वोंट बी गेटिंग मल्टीपल सिलेक्ट टैग, प्लस आपका फिल्टरिंग भी वर्क करेगा. ठीक है, एंड ऑल बेस्ड ऑन योर एपीआई के फेच के, राइट? तो हमने कुछ भी स्टैटिक नहीं बनाया. द HTML is just there to provide a structure and rest is getting done by JS. ठीक, तो let me just quickly walk you through पूरा हमने क्या क्या किया है. एक बार walk you through. चलो, तो let me write down steps here, maybe confuse ना हो जाओ, तो steps लिख दे, right? So first thing first, we were calling a function which is called get data, right? तो अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हो फॉर दिस गेट डेटा फंक्शंस, व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस गेट डेटा फंक्शन? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर यूजिंग एसिंक अवेट इन दिस. एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं, ठीक? तो लेट्स राइट दैट कि एसिंक एसिंक अवेट यूसेज. ठीक, उसके बाद इट्स फेचिंग टू थिंग्स. क्या क्या फेच कर रहा है? दो क्या क्या चीज फेच कर रहा है. First thing, it's fetching products, and second, it is fetching the array of categories. Right. तो पहला चीज, it's basically fetching data and array of categories. ठीक, ये दो चीज आपका गेट डेटा फंक्शन फेच कर दे. उसके बाद एक फाइनल स्टेप क्या है? इट्स कॉलिंग शो डेटा with the data and categories. Yes, तो डेटा और कैटेगरीज के साथ it is showing that data. ठीक, गेट डेटा फंक्शन क्लियर है? क्या कर रहे हैं? ठीक, उसके बाद we are running this big function which is called show data. इतना बड़ा फंक्शन, राइट? चलो let's try to reduce it. क्या क्या कर रहे हैं इसमें? We are accepting two things, data array and we are getting the categories, right? तो इस पीस ऑफ कोड में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? We are creating and appending the categories dynamically. Are we doing that in this piece of code? यहाँ तक, right? तो जितने भी categories was present inside that API, we were creating it and appending it to our DOM.
उसके बाद नाउ यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, यहां तक क्या हुआ, we were basically adding change event, and based on that the values we were dynamically calling the URL, right? So based on the values that we were provided inside our select tag, we were calling our URL, right? Also हमें फिर से कैटेगरीज कॉल करना पड़ा क्योंकि फाइनली हमें शो डेटा फंक्शन कॉल करना था, राइट? एंड वो दो चीज एक्सेप्ट करते हैं, फिल्टर डेटा एंड कैटेगरीज। क्लियर है? इतना पीस ऑफ कोड भी क्लियर है क्या कर रहा है, राइट? एंड दिस पार्ट इज प्रिटी मच सेल्फ डिफाइंड। ये तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट डे से, राइट? तो ये क्लियर है, ठीक है गाइस? डाउट्स, एनीथिंग सो फार? कुछ भी नया नहीं किया है, पुराना सिंटेक्स यूज किया है, जस्ट वी वर यूजिंग अपडेटिंग द सिंटेक्स, दैट्स ऑल। प्लस वी हैव लर्नड कि हाँ एपीआई को यूज करके भी हम डायरेक्टली फिल्टर यूज कर सकते हैं, दैट एंड ऑल आई शुड बी एबल टू डू दैट। क्लियर? अभी क्या होता है, एपीआई को ही यूज करके ना वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। एपीआई इसीलिए दैट्स व्हाई द बैकएंड इज देयर, सो दैट यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स में क्या है, वी कैन सर्च डेटा फ्रॉम एपीआई, राइट? वी कैन फिल्टर द डेटा, वी कैन इवन सॉर्ट द डेटा, राइट? तो लेट्स से आपको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन प्राइस, कि सबसे ज्यादा प्राइस वाला सबसे पहले दिखाएगा और सबसे कम वाला बाद में दिखाएगा। तो यू कैन सॉर्ट इट, इवन इट शुड बी समवेयर इन दिस एपीआई, एपीआई में होना चाहिए। गो एंड चेक दैट आउट, एक बार सॉर्ट चेक करना इफ यू आर एबल टू अप्लाई इट और नहीं, तो हम करेंगे बाद में, ठीक? एंड लाइक यू सी यहाँ पे you're gonna have multiple things, right? तो we can limit results, तो you can basically call this API and उसको बोल सकते हो कि we just want 5 or 6 results, right? तो वो results limit क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि there is something which is called pagination। pagination का नाम सुना है? pagination, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी क्रिएट पेजेस, राइट? तो मान लो वी हैव पेज वन पे 5 डेटा दिखाएंगे, उसके बाद यूजर जब पेज 2 पे क्लिक करेगा तब उसको नेक्स्ट 5 डेटा दिखाएंगे। तो दिस थिंग इज कॉल्ड पेजिनेशन। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम एपीआई और इटसेल्फ, ठीक? तो इफ आई गेट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर ना, आई शो यू हाउ टू अप्लाई पेजिनेशन। क्लियर? तो पहले ये बताओ, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ES6 का वी लर्न फ्यू थिंग्स एंड देन वी डिड दिस एप्लीकेशन, no doubts? All right, so I'll stop recording and then we'll discuss few things.